चीफ मिनिस्टर भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता. आप सरप्राइज होंगी. यही चीज़ अगर आज कराची कैपिटल रहता ना, आप कराची की हालत नहीं होती. कराची को आप फेडरल सिटी बना दें. हम हर चीज़ एक्चुअली गवर्नमेंट पे डाल देते. कचरा भी उठाना है जी तो आप कचरा फेंके नहीं. हाउ वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन एज पीपल. हर चीज़ एक्सपेक्टिंग कि जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया. Assalamu alaikum everyone, I'm Michelle Mohiyuddin and welcome to another episode of the Pakistan Pivot. As citizens of Pakistan, there's a lot of pressing questions on our minds these days regarding the political and economic conditions of the country. And to answer these questions, we have just the right person here with us today. Welcome and thank you so much, Mr. Saleem Mandviwalla, for being with us today. Mr. Mandviwalla, you were the Deputy Chairman Senate. He is the former Finance Minister of Pakistan and he has also served as the Chairman Board of Investment. I welcome you to the podcast. Thank you. Let me first start with you. Tell me something about yourself and your journey into politics. And also, for the youth that wants to come into politics, what would you say, how should they do that? Actually, I belong to a business family from Karachi, and basically my passion was flying, and I trained to be a pilot, and I was a pilot in the United States, flying for a small airline. But then eventually I came back to Pakistan, and then I started working in my family business. And during that period I met Mohtarma Benazir Bhutto, and kind of a relationship started when she was in exile. And we became good friends, and she convinced me to come into politics and join People's Party. And I was little, as my family has never been in politics and we have no political background, so everybody was little concerned that why go into politics in Pakistan. It's always problems in politics and you get a bad name and things like that. But anyway, she convinced me. She says, if you all think like this, nobody good will come in politics. So that's how I decided to join, but unfortunate thing happened that she was assassinated, and which really set People's Party back, and everybody who actually believed in her and her politics. But then President Zardari came in and brought all the people who were working with her or who were close to her to continue the agenda of Benazir Bhutto, and that's how we got into politics, and here I am today. What advice would you give to the youth? Well, I think politics is a difficult thing. It's not only in Pakistan, everywhere else. It's something that you have to do it with passion, and you must have the conviction to do politics. And basically, politics is to serve the people. If you've got that temperament, if you've got that, you have that feeling to serve the people, then it's fine to be in politics. But if you don't, then politics is difficult. It's very difficult. And a lot of people come in and out of politics for this reason. So I think if you have the passion, then only then go get into politics. Otherwise, no. Mr. Mandviwalla, you were the Deputy Chairman of the Senate. Now you are the Chief Whip. Because most of our audience is young, can you explain to us कि Chief Whip क्या होता है? Achha ji, let me explain to you. There are some constitutional positions, like the Chairman and Deputy Chairman are elected by the Senate. And Senate, the difference between Senate and National Assembly is that Senate has equal representation of all the provinces. The National Assembly has representation as per population. So in the Senate, every province is represented equally. So that is why we call the Senate the House of Federation. It brings the federation together equally, not like National Assembly, that Punjab has more seats, then Sindh has seats, then KPK, then Balochistan, So it doesn't. So the voice of all provinces are the same, at the same level in the Senate. So this is the basic difference between the two houses. Then of course the number, we have 104 Senates,
and senators. They have 300 something, 70 or 40 members in the National Assembly. So basically, this is the structural difference. The other is, you asked me this question: what is a chief whip? Chief whip is basically appointed because there are many parties. There are two divisions in both the houses. One is the treasury. Treasury is all the parties which are in the government, and the other is the opposition. So the chief whip is appointed by the government to look after all the parties which are in the government, and that is why they call him. It's a basically an English term Ji. used in the UK Parliament and the US Parliament and Ji. Canadian Parliament. So basically, it's an English term used for a person who is looking after all the members who are part of the government, and which includes many political parties. So basically, the chief whip is organizing and working with all the members for the issues in the parliament. So this is the role of the chief whip. And then after that, we have parliamentary leaders. Ji. Parliamentary leaders are leaders who are responsible for their respective parties. So they will deal with their respective parties in the house. So this is different roles of different positions in the parliament. And Okay. One thing I'm really interested in knowing is what is the motivation behind becoming a senator in this country? इस सीट में ऐसा क्या है जो लोग 20-20 करोड़ देने को भी तैयार हो जाते हैं? अच्छा देखें, वो जो आपको 20-20 करोड़ की बातें नज़र आती हैं ना, दैट इज़ वेरी फ्यू. दैट इज़ नॉट द जनरल परसेप्शन. और वो एक्चुअली इट्स अ स्टेटस. यू आर बेसिकली बाइंग अ स्टेटस, लाइक यू join a club, or you join a association, or you join any position which will give you status. Yep. So those people who are paying this money and trying to come into the Senate are purely coming for the name of the Senate, and All to the be wrong called reasons. to be called the senator. Ji. That's all. So they might have different motives, but by and large, I should say very comfortably 90%, 85% people come with political convictions. People come from political backgrounds. People come from political parties, and they have served their parties for years and years, and they are brought in as senators. The reason why countries have Senate, let me explain to you. Ji. Reason why Pakistan has Senate is because you can bring technocrats, you can bring people of that sector. Like you can have doctors, you can have engineers, you can have businessmen, you can have any kind of person. You can have legal minds, which we have in the Senate. So you have an option, because an electable a person who is elected is elected. Matlab it doesn't mean that he carries the qualification Ji. to come. So he is an elected representative Of the people. So you don't have the choice that you want a doctor to be elected or you want an engineer to be elected. So in Senate you have that choice. So you select those people from your party which represent these sectors, so they can add value. Because basically the job of Senate is legislation. Ji. And in legislation you need people who can contribute, and you can only contribute if you have that background. If you don't have a background, you don't have any knowledge, you don't have any idea, you cannot contribute. So majority of the legislation is done in the Senate. It is passed by both houses, it is discussed in both the houses, but the work on legislation is done in the Senate. Okay. Because those legal minds, those professionals are all present in the Senate. Achal, I would now change the spectrum of questioning. Please. And let's move towards some economy related questions. sure. Because as a businessman and ex-finance minister, what would you say were the reasons behind the fall of the rupee? And what suggestions would you give for strengthening the rupee? Well, I personally feel falling of the rupee was coming since long. It just didn't happen. And it is just bad management, in my view.
See, it's very simple. I'll try to make it very simple. जी. You have $60 billion and you spend $70 billion, or you spend $80 billion. Where are those $10 billion going to come from? You will borrow, you will beg, or whatever you do to raise the balance $10 billion. Or what will happen is that your own currency will get affected, because when you can't find dollars, obviously you will try other means which will indirectly affect your currency. So basically what we need to do is we need to live within our resources, especially the dollar resources. Rupee though you can manage, it's your own currency, you can manage. Even that has inflation issues when you do that, but dollar is something you can't print in Pakistan. Yeah. So you must remain in your own resources of dollars. You must not put yourself in a position where you don't have dollars and you have to go and borrow them to support your trade deficit. Yeah. So this is the main issue right now. And if we are, which we are doing now, which we are doing now, and if they are able to control this, you will see the rupee parity will get better with the dollar. Okay. And what are the biggest causes behind Pakistan's current economic crisis? Bad management. Again, see, it's very simple. If I manage a business or I manage a country, if you don't manage it right, you will land into a situation where we have now. When you spend more than your earnings, it's very simple. You spend more than what you earn. Yeah. Eventually, what will happen? You will be in trouble. You will be bankrupt. So Pakistan has been doing that, and Pakistan has been spending more than what it has, in dollar terms and in rupee terms both. So we have to stop doing this. It will cost us. It will be difficult on us, but you have to live within your resources. Pakistan has to learn to live within its resources. अच्छा, आप समझते हैं कि अवाम के ऊपर अभी सबसे बड़ा बोझ बिजली के बिल्स का है? देखिए, अवाम पे सिर्फ बिजली का बोझ नहीं है, अवाम पे फूड इन्फ्लेशन का बोझ है, अवाम पे बिजली का बोझ है, अवाम पे पेट्रोल का बोझ है, अवाम पे मैं समझता हूँ कि अवाम इज़ इन ग्रेट डिफ़िकल्टी. और इसको टैकल करना गवर्नमेंट का इट हैज़ टू बी ऑन देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. नो, बट माय क्वेश्चन इज़ कि देखें, चाइना में बिजली बिल्कुल फ्री है, तो दे हैव टू एडवांटेजेस कि एक तो लेबर कॉस्ट इज़ वेरी लो, सेकंड electricity is free, so their manufacturing cost is so low that no one in the world can compete with them. तो हम अपनी बिजली फ्री क्यों नहीं कर सकते? Their electricity is free to certain sectors. Overall electricity free नहीं है. मगर हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है. और प्लस ये कि फ्लड अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उसमें मिनिमम आप क्या समझते हैं कि मैं तो समझता हूँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती. सो वो तो एक बहुत डिफ़िकल्ट इशू है. बट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू बी, वी हैव टू लुक एट अदर सोर्सेज. अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था where दिल्ली में 300 units were given free to households. How? They must be also generating somehow. They must be also subsidizing somehow. कोई तो तरीका होगा. So they have to look for avenues to provide cheaper electricity to the people who can't afford electricity. The people who can't afford 50 rupees a unit, which is going on today, या 60 rupees, I don't know how much it is now. तो ये जो है ना बड़ा ज़रूरी है. और दूसरा इशू अगर आप बिल देखें, is all taxation is being recovered through electric bills. अगर 30 रुपये यूनिट है तो 30 रुपये टैक्स है. तो this is something that the government should stop depending on collecting taxes through electric bills, which is affecting people who don't even need to pay taxes. तो ये ज़रा ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, जिस पे हम I think the government needs to work on this and find a way that we can give relief to people. अच्छा, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि वहाँ ज़्यादातर एरियाज़ में जहाँ फ्लड आया वहाँ वैसे भी बिजली बहुत
क्योंकि कम मैं आती वैसे थी। कभी कभी ड्राइव करके तो वहाँ इतनी जाता हूँ ना, तो मैं देखता था कि यहाँ तो बिजली ही नहीं है। और आप उनसे पूछें कि जी यहाँ बिजली क्यों नहीं है, कहते हैं जी बिल नहीं देते, तो हम बिजली नहीं देते। नहीं, और तो स्पेशली ये भाई अगर आप बिल नहीं देते तो आप कोई और ऑल्टरनेट तरीका तो ढूंढे ना उनके लिए, ताकि उनके पास बिजली हो। बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर पीपल लिविंग इन 21st सेंचुरी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इट्स लाइक लिविंग इन डार्क एजेस। yeah, and that's हाँ, not fair, इट्स especially in नॉट फेयर। Balochistan. नहीं, बलोचिस्तान, इवन इन सिंध। No, but I'm saying क्योंकि बलूचिस्तान की population इतनी scattered है, Scattered है। it's very hard, but it's अब been देखिए long enough दुनिया that the में government should prioritize giving them electricity. दुनिया में इसके सॉल्यूशंस तो निकाल लिए ना। मतलब हर जगह जहाँ स्पेशली वी आर ब्लेस्ड विद सो मच सन, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है फार फ्लंग एरियाज़ में, छोटी जगहों में बिजली देना। इट जस्ट रिक्वायर्स few panels of solar and giving electricity to every household that we need. तो ये देखें, इट्स प्रायोरिटी, वही मैं आपको कहता हूँ ना, पैशन इज़ रिक्वायर्ड टू डू दीज थिंग्स। तो अगर पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा, तो चीज़ें होंगी। True. I think कि अभी youth, maybe they might, if they start, because our youth has become quite well aware of the political situation in the country, और वो बहुत, they keep tabs, they're becoming very aware, and maybe in the recent and coming future they might take charge. Why not? Yes, of Why course. not? Youth is the future of every country, not only Pakistan. And why the youth should not come? और अभी भी आप देखें हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं, they are very young, who have Minister of Industry हमारे हैं, he's in his 40s. तो the youth is coming in. ऐसा नहीं है कि youth is not coming in, and but youth has to come in with this passion that we need to serve the people. देखें, जब तक ये नहीं होगा ना किसी भी यूथ में या किसी भी इंडिविजुअल में जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है या जो कोई कुछ करना चाह रहा है, अगर उसमें ये जज्बा नहीं होगा, आप ये कह लें, तब तक तो इट रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज। अच्छा, फ्लड्स के बाद इंटरनेशनल कंट्रीज haven't been willing to give cash to the government of Pakistan. Do you think it's because of the corruption in the country, or do they not believe that we are capable enough of allocating them and working with those funds and providing relief to the people? और क्या basis है, I mean, इस distrust की, because ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है पाकिस्तान की रेपुटेशन पे। देखिए, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू कंट्रीज गिव सपोर्ट, हाउ डज यूनाइटेड नेशंस गिव सपोर्ट, हाउ डज वर्ल्ड बैंक गिव सपोर्ट, हाउ डज ADB गिव सपोर्ट। उनका एक तरीका है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद गिविंग यू कैश और गिविंग यू काइंड और वर्किंग थ्रू NGOs. They will work the way they work everywhere in the world. अगर आप चली जाएं पीछे, when earthquake came, सारी दुनिया से सपोर्ट आई, सारी लोगों ने आके घर बनाए, टर्की ने आके पूरे हॉस्पिटल्स बना दिए आज़ाद कश्मीर में। तो ये आप मत कहें कि जी क्योंकि पैसे नहीं आ रहे तो सपोर्ट नहीं मिल रही। सपोर्ट बहुत तरीके से आ रही है, और सपोर्ट हर तरीके से आ रही है। मे बी यू डोंट सी दैट मच कैश कमिंग विच एक्चुअली इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। देखिए ना, हमें तो हाउसिंग डेवलप करनी है, जो लोग बेघर हो गए हैं उनके घर रिस्टोर करने हैं, उनको खाना देना है इन टर्म, उनको उनकी डिस्प्लेसमेंट हैंडल करनी है। तो इट रियली डजेंट मैटर हाउ इट कम्स। ये कहना कि नहीं जी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते इसलिए पैसे नहीं दे रहे, पैसे की तो बात ही नहीं है। बात है कि हमें टेंट्स चाहिए, हमें उनको खाना देना है, हमें उनको डिस्प्लेस्ड लोगों को दोबारा प्लेस करना है, उनको सपोर्ट करना है। तो ये कोई ये दिस अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम एट, दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। एवरीबडी लाइक्स टू डू पॉलिटिक्स ऑन एवरी इशू। ये इशू जो है, इस पर पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर। और अभी अब फ्लोरिडा में, कल मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि हम फ्लोरिडा छोड़ के अपने घर से जॉर्जिया जा रहे हैं। बिटवीन यू एंड मी, व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स कैन डू? नथिंग। That disaster will happen, that hurricane will come. People are going on their own. कोई मोटेल में बुकिंग करा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। एवरीबडी इज लुकिंग। यू देखें, नेचुरल डिज़ास्टर कहीं भी आता है, यू कांट एक्सपेक्ट कि जी गवर्नमेंट विल स्टॉप दैट नेचुरल डिज़ास्टर। यू कैन नॉट स्टॉप अ नेचुरल डिज़ास्टर।
टेक्सास में मुझे याद है जब फ्लड्स आए थे, But the लोग government बोट्स में घूम रहे थे. They were going from their house to house in boats. नहीं, लेकिन तो गवर्नमेंट कैन बिल्ड बेटर रेजिलियंस. क्योंकि फ्लड्स तो 2010 से आ रहे हैं. नहीं, फ्लड्स आ रहे हैं ज़रूर, मगर इस टाइप के फ्लड तो कभी नहीं आए ना. और देखें, ये the world has accepted that this is happening in Pakistan because of the climate change. You have the highest peaks in the world. And obviously जब वहाँ से glaciers melt होते हैं, burst होते हैं, तो they are sending the amount of water that they are sending, nobody can control. इंडिया को भी पानी छोड़ना पड़ा आपकी तरफ, वो इसीलिए because they were scared of their areas being flooded. तो ये natural disasters में ये कहना कि जी government should be ready for a natural disaster, even a country like United States is not ready, even a country like China is not ready. They can do a better job than Pakistan, I agree, because they are a developed country, they have more capacity, they have more resources. But I don't think ये जो argument है कि जी government को लोग trust नहीं करते, ऐसी कोई बात. अच्छा, अभी हमने फॉरेन एड पे रिगार्डिंग डिस्ट्रस्ट की बात की, बट वी सी दैट देयर इज़ ऑल्सो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पाकिस्तानी पब्लिक एंड द गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम सब सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, a lot of Pakistanis, they prefer either going themselves, either giving their money to NGOs or some other organizations, independent organizations, but they do not feel that much comfortable trusting the government. What do you think? Why? What's the basis of this distrust? देखिए, it's not a distrust. This happens in every disaster. There is a private sector, there is an NGO, there is a individual who is doing it, there is a group which is doing it. ये तो देखें, ये सब again it is being presented wrongly. गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट के थ्रू करें. देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट, एंड नाइदर द गवर्नमेंट सेज कि आप हमें दें. गवर्नमेंट तो कहती है आप खुद करें. दैट्स इवन बेटर. वी डोंट हैव टू पुट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू मैनेज. तो इफ़ पीपल आर डूइंग इट ऑन देयर ओन, NGOs are doing it, private sector is doing it, that's fine. उसमें कोई ख़राबी नहीं है. I don't know why it's perceived that all this has to be done by the government. That doesn't have to. And neither all this money needs to go to the government. It is not that they don't trust. It is not required. It is not required at all. They should be doing this on their own. आपको मैं बताऊं, मैंने कितनी एक्टिविटी की है on my own, and I'm still doing it. जी. तो but I could also say कि भाई I am sitting in the government. Why am I not doing it through the government? Because government तो जो कर रही है वो कर रही है. आपको तो किसी ने नहीं रोका. नहीं, लेकिन the government definitely has more money, more resources, more. Nobody is saying who has more or who has less. नहीं. You have 10 rupees, you please contribute 10 rupees. I have 1,000 rupees, I will contribute 1,000 rupees. How I contribute, that's up to you. You don't have to give that 10 rupees to the government. So you're saying the government's response to this disaster or the disasters in the past has not been inadequate? No, government has done what they can. But at the same time, the NGOs and the private sector and the individuals, what they are doing is also fine. There's nothing wrong in that. जो issue है ना, जिसको आपको सोचना चाहिए, वो क्या है? वो coordination का issue है. That is a challenge every time कि there is no coordination. अगर यही चीज़ एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आए, बजाय हर आदमी एक ही आदमी एक जगह जा रहा है. NGO भी जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी जा रहा है, इंडिविजुअल भी जा रहा है, गवर्नमेंट भी जा रही है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर इसमें कोऑर्डिनेशन हो थ्रू द गवर्नमेंट कि भाई आपने कहा जी मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ चले जाएं, यहाँ कोई नहीं गया. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. ये चीज़ ज़रूरी है. ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के थ्रू करें या NGO के थ्रू करें या किसी के थ्रू करें, और इसमें कोई डिस्ट्रस्ट वाली बात भी नहीं है. अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, डिज़ास्टर से भी पहले, INGOs के ऊपर बैन लगा हुआ है, और इस डिज़ास्टर के अंदर इस बैन की वजह से
INGOs काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं डिसबर्सिंग द एड. तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि वी नीड फाइनेंशियल एड, असिस्टेंस, एनी काइंड ऑफ एड, हेल्प आवर पीपल. गवर्नमेंट वांटेड टू रिव्यू, ये आज से नहीं है, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ. गवर्नमेंट वांटेड टू रिव्यू द NGOs एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान. उस एम्बिट में काफ़ी NGOs हैव बीन रिस्टोर्ड एंड काफ़ी NGOs हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम वर्किंग, क्योंकि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ डूवियस थी. NGO डज नॉट मीन कि एवरी NGO इज़ ओके. सॉरी, ये तो मैं भी विटनेस में रहा हूँ, बिकॉज NGOs को वीज़ाज हम दिया करते थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में. We saw that the CIA ran a false operation. No, not only CIA. There were people sent to Pakistan under the ambit of NGOs to come and survey things, to come and do things. तो ये तो एक constant, जिसको आप कह लें, चीज़ चलती जा रही है कि review of NGOs operations. कि what they are doing in Pakistan, what is their role, and if they are into something which is not their mandate, then those NGOs have to be. और उसमें कई सही NGOs भी आई शुड से अफेक्ट हो गई, मगर अभी काफ़ी हद तक काफ़ी NGOs हैव बीन क्लियर्ड टू डू वर्क इन पाकिस्तान. कोई इशू नहीं. अच्छा, डू टेल मी कि how long do you think it will take the government to rehabilitate the people of Sindh that have been displaced by these floods? मैं समझता हूँ कि डिपेंड्स. वाटर तो पहले रिसीड करे ना. जैसे वाटर रिसीड करता है, आई थिंक विद इन अ ईयर आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू help the people to go back to their homes. क्योंकि एक और भी मसला है उसके बाद मसला ये है कि आपकी पूरी एग्रीकल्चर क्रॉप्स ख़त्म हो गई हैं. जो लोग एग्रीकल्चर पर अपने आप का गुजारा कर रहे थे, वो भी अब डिफ़िकल्टी में है. तो देयर इज़ अ सेकंड स्टेप दैट हाउ दोज लॉसेस कैन बी गिवन टू पीपल एंड हाउ दे कैन अगेन स्टार्ट डूइंग व्हाट दे वर डूइंग. अच्छा, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में आई थिंक गवर्नमेंट को एक और चीज़ भी माइंड में रखनी चाहिए कि बिल्ड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. सो दैट, देखिए, अभी तो आप सरप्राइज़ होंगी क्योंकि मेरे पास भी कुछ लोग काम करते हैं इन कराची फ्रॉम सिंध. वो कह रहे थे कि सर हमारा घर गिर गया है, हमारा जो घर गिर गया है उसको आप ठीक करा दें या उसको आप दोबारा बना दें. तो इस वक्त तो देखें कोई एज सच इमीडिएटली आप ये प्लान नहीं बना सकते कि जी सिटीज़ की सिटीज़ बनाई जाएं, घर के घर बनाए जाएं. इस वक्त तो अगर आप उनको दोबारा उनके घरों में, किसी की छत गिर गई है उसकी छत डलवा दें. जैसे आपको याद होगा जब अर्थक्वेक आया था तो एक स्कीम बनाई थी कि जी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम हर घर को देंगे, वो आप अपना घर खुद ठीक करा लें. तो समथिंग लाइक दैट नीड्स टू बी डन. वो जो आप बात कर रही हैं दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट कांट बी डन इन अ शॉर्ट टर्म. तो बट ये भी अगर हो जाए कि लोगों, लेकिन लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो होनी चाहिए ना. वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए, बट दैट्स अगेन अ ह्यूज कॉस्टली अफेयर. It's like literally developing small cities, small towns all together. Yeah. Acha, you represent the Pakistan People's Party, and it has a long history of sacrifices and contribution to the Pakistani that's the only politics. Party in this country. But unfortunately, the party has now been reduced from a national party to a provincial party. What is the strategy of PPP to revive itself? देखें, ये भी statement I don't agree with you. It has not been reduced to a regional party. आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान में, कहीं भी आपको पीपल्स पार्टी का आदमी वहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान ऑल द वे टू कराची. ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि येस वी कांट विन लाइक वी यूज्ड टू विन, बट ये कतई नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी एक रीजनल पार्टी हो गई. येस वी आर फेसिंग चैलेंजेस. देखें, जिस पार्टी के 2 मेजर लीडर्स को असैसिनेट कर दिया गया, एक को हैंग कर दिया गया, तो उसके बाद भी दैट पार्टी हैज़ स्टिल सर्वाइव्ड. बहुत बड़ी बात है. तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ वेरी मच देयर, इट्स एवरीवेयर इन द कंट्री, बट येस इट इज़ अ चैलेंज फॉर पीपल्स पार्टी टू विन सीट्स फ्रॉम एवरीवेयर, like it used to win when Zulfikar Ali Bhutto was alive, like it used to win when Benazir Bhutto was alive. तो ये एक चैलेंज है आज, and this is a challenge for our young leader, upcoming leader, that he has to take the party along and he has to convince the youth to follow this party and
Let me tell you, this is the only party which can keep Pakistan together. Otherwise, everybody talks of their region. You will never hear a People's Party member talking about regional, talking about a language, talking about a caste, talking about a province. Actually, independent analysts are saying that the PPP will lose this time because of the ongoing floods and their mismanagement and poor response. देखें, ये तो फिर मैं वही कहूँगा कि जैसे लोगों ने कह दिया कि जी ये एड नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, लोग ट्रस्ट नहीं करते. दीज आर ऑल, आई डोंट थिंक, आई थिंक एवरीबडी इज़ ट्राइंग. एंड इन दिस डिज़ास्टर देखें, किसी को सेटिस्फाई करना टू इट्स फुलेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मैंने अभी आपको अमेरिका की एग्जांपल दी. अब वो भी कह दें कि जी वाशिंगटन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, Democratic President Biden is not doing anything, we have to leave our house, hurricane is coming in Florida. They didn't say anything like that. They just said कि how do we manage in this situation. So लोगों को सिर्फ यही कहना, हम हर चीज़ एक्चुअली गवर्नमेंट पे डाल देते. कचरा भी उठाना है जी, तो आप कचरा फेंके नहीं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू लिटिल बिट थिंक कि यार व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन एज पीपल. हर चीज़ एक्सपेक्टिंग कि जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया. तो आई थिंक, और किसी पॉलिटिकल आदमी की या किसी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी की, ये डिज़ायर नहीं होगी कि हम फ्लड विक्टिम्स को हेल्प ना करें. यू वुड वांट टू डू इट, आई वुड वांट टू डू इट, एवरीबडी दैट आई नो वांट्स टू हेल्प द पीपल हु आर अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड. तो ऐसी बात है नहीं. These are all perceptions being created, and वही फ्लड्स के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है. हर वो चीज़ जिसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हम उस पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं. तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कराची के लोगों को बहुत शिकायतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एंड दिस इज़ अ पार्टी दैट्स बिन इन पावर फॉर ऑलमोस्ट 15 years. इवन 5 year टेन्योर इतना होता है कि काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है और वो नज़र आ रहा होता है. लेकिन कराची में जो 15 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी, अभी भी वही प्रॉब्लम्स हैं. इट्स बिकम वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ क्वाइट टेरेबल एट द मोमेंट. और ये सब इसके बावजूद कि MQM इज़ योर द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ कराची इज़ ऑल्सो PPP's ally. तो वाई द गवर्नमेंट इज़ स्टिल इनफेक्टिव इन कराची? देखिए, मैं आपको बताऊं, कराची इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिटी. कराची को आप कंपेयर नहीं कर सकते. कराची इज़ मिनी पाकिस्तान. लाइक यू हैव इश्यूज ऑल ओवर पाकिस्तान. Karachi is literally, I don't know if you have ever studied Karachi. I would like you to I've lived in Karachi. You have lived in Yes. Karachi. Now, if you have lived in Karachi, Karachi is divided into east, west, south, north. MQM dominates some part of Karachi. Pathans dominate some part of Karachi. And some part of Karachi is dominated by everyone, mixed population. तो कराची की जो इश्यूज़ हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जी. और कराची को मैनेज करना, मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट ईजी. इट इज़ नॉट ईजी पॉलिटिकली, इट इज़ नॉट ईजी एडमिनिस्ट्रेटिवली, इट इज़ नॉट ईजी इन मैनी वेज. देर आर गवर्नमेंट्स विद इन गवर्नमेंट्स. मतलब आप चले जाएं जहाँ मैं रहता हूँ, डिफेंस में, डिफेंस एंड क्लिफ्टन, दैट कराची में तो देयर वर्ल्ड्स अपार्ट. एक एरिया डिफेंस क्लिफ्टन, एक लियारी. वो नहीं, आप डिफेंस क्लिफ्टन में गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती. आप सरप्राइज होंगी इस बात पे. कुछ नहीं आप कर सकते. ना आप कचरा उठा सकते हैं, ना आप रोड बना सकते हैं, ना आप पानी दे सकते हैं. आप कुछ नहीं कर सकते until the Clifton Cantonment Board and the DHA wants that to happen. तो इतना बड़ा एरिया है जो कि आपका एक एलीट एरिया है, वो आपकी गवर्नमेंट्स के हाथ से बाहर है, which nobody knows. Probably a common man doesn't know, but this is the reality. फिर there are 4 cantonments in Karachi. Yeah. Sadar Cantonment, which is the old city, that is also a cantonment. आपका MA जिना रोड, ये सब सारा एरिया इज कंटोनमेंट.
गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ। कुरंगी का पार्ट ऑफ एरिया इज कंटोनमेंट, कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप इशू है, और हाउ इट विल इवेंचुअली गेट रिजॉल्व आई डोंट नो टुडे, बट दिस नीड्स टू गेट रिजॉल्व। अच्छा, मैं आपसे एग्री भी करूंगी और डिसएग्री भी करूंगी कि यू आर राइट, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स आप बिल्कुल कर सकती है सिटी, लेकिन the world has a lot of complex cities and they are being managed quite well. नहीं, और 15 साल तो काफ़ी लंबा अरसा है। मैं अब आपको इन कंपैरिजन लाहौर की कंपैरिजन कर देता हूँ। लोग कहते हैं जी लाहौर इज अमेजिंग, एट वन टाइम कराची यूज्ड टू बी अ सिटी और लाहौर जो है वो गांव होता था। आज लाहौर जो है इज़ अ वाइब्रेंट सिटी। भाई आप ये दो स्टडी कर लें, एक कराची की और एक लाहौर की, आपको पता चल जाएगा भाई लाहौर इज़ वन एडमिनिस्ट्रेटर, वन सिटी, वन चीफ मिनिस्टर, वन गवर्नमेंट, वन सिटी। आप कुछ भी चाहे लाहौर में आप कर सकते हैं कहीं भी, बट यू कांट डू दिस इन कराची। आप MQM के एरिया में कुछ नहीं कर सकते, आप कंटोनमेंट्स में कुछ नहीं कर सकते। आप ये जब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं सिटी के। चीफ मिनिस्टर भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, आप सरप्राइज होंगी। तो ये जब तक स्ट्रक्चरल इशू आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, कौन कर सकता है? ये देखें, ये तो अब somebody has to take ownership, somebody has to do something. Somebody has to take ownership। अच्छा, उसके ऊपर बिकॉज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी अब काफ़ी सफ़र कर रही है। हमने तो एक और आइडिया दिया था, ये सारे स्टेक होल्डर्स को छोड़ के इस्लामाबाद का एक और भी रोल है कराची में, विच वी कीप क्राइंग कि भाई आप हर दफ़ा, आपने इमरान खान के वक्त सुना होगा 480 बिलियन का पैकेज, 1000 बिलियन का पैकेज, 1 रुपया नहीं आया कराची में। तो it's a country, let me tell you, it's not a city, let us be, it is a country of 30 million people. कंट्रीज की पॉपुलेशन इज, कनाडा की पॉपुलेशन 30 मिलियन, तो इट्स लेकिन हमारी सिटीज़ की तो है ही ज़्यादा, क्योंकि हमारी ओवरऑल कंट्री की बहुत ज़्यादा है। वो सही है, मैं वेस्ट कराची की बात करें तो जहाँ 30 मिलियन लोग रहते हों, उसमें तो यार देयर आर टू मेनी स्टेक्स। मैं दोबारा एक बात कहूँगी, चाइना, अगर हम चाइना को देखें, अब चाइना ने क्या, उनकी भी तो सिटीज़ में, चाइना ने क्या किया, बीजिंग को फेडरल सिटी बना दिया, शंघाई को फेडरल सिटी बना, 5 फेडरल सिटीज़ हैं चाइना में, विच हैव नथिंग टू डू विद द प्रोविंस, इट इज़ ऑल डेल्ट बाय बीजिंग। तो हमने भी ये सजेशन दिया था कि कराची को आप फेडरल सिटी बना दें, लेट इट रिमेन इलेक्टोरली और वैसे एज पार्ट ऑफ द प्रोविंस, बट मेक इट अ फेडरल सिटी। यही चीज़ अगर आज कराची कैपिटल रहता ना, आप कराची की हालत नहीं होती। आप कैपिटल शिफ्ट कर दिया आपने, कराची को एज इट इज़ छोड़ दिया, एंड इट कंटिन्यूज़ टू डिटीरिएट। आज और मैं जैसे आप बात कर रहे हैं, स्टिल डिटीरिएटिंग, देयर इज़ नो बेटरमेंट टुवर्ड्स कराची। और ये कलेक्टिवली होगा, ये आइसोलेशन में कभी इम्प्रूव नहीं होगी सिटी। PPP जब भी अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करती है, दे ऑलवेज मेंशन द 18th अमेंडमेंट। जी। Obviously the devolution of power is a must for growth of any democracy. लेकिन can you tell me कि सिंध की आवाम को 18th अमेंडमेंट से क्या फ़ायदा हुआ है? देखें, मैं आपको बताऊं, 18th अमेंडमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी सारे जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स किए सिंध गवर्नमेंट ने, जो कि पहले नहीं कर पाती थी, वो एक बेनिफिट हुआ। प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिली, प्रोविंसेस, नॉट ओनली सिंध बट एवरी प्रोविंस को ये हक मिल गया कि वो क्या चीज़ करना चाहते हैं प्रोविंस में, जो उनके पास पहले नहीं था। एंड दैट वाज द ड्रॉबैक। सो 18th अमेंडमेंट बेसिकली वाज गिविंग autonomy to the provinces and to help them to do what they feel is required in the province. तो आई थिंक उससे कई बेनिफिट हुए, कई चीज़ें हुई। अगर आप सिंध में जाएं बिफोर द 18th अमेंडमेंट, यू कुडंट फाइंड रोड्स इन सिंध। आज आपको रोड्स तो मिलती हैं सिंध में, ठीक है, मे बी नॉट टू योर एक्सपेक्टेशन एंड माई एक्सपेक्टेशन, बट लॉट ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस इन सिंध आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। और उसकी पूरी एक बुक है, अगर मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट क्या क्या हुआ सिंध में, क्या क्या हुआ पंजाब में, क्या क्या हुआ KPK में,
which previously did not happen. तो देखें, मैं तो फर्दर डाउन द लाइन की बात करता हूँ. मैं तो कहता हूँ इससे भी डिवॉल्व करें आप नीचे जाएं यूनियन काउंसिल्स में, आप फर्दर इसको एनएफसी को फर्दर डिवॉल्व करें ताकि उन तक पैसे पहुँचे और उनको पता है कि जी हमें क्या करना है अपने एरियाज़ में. अच्छा, आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं. कैन यू बी मोर स्पेसिफिक के हेल्थ, एजुकेशन और सिविक फैसिलिटीज़ के अंदर आवाम को क्या फ़ायदा मिला है सिंध में? देखें, सिंध की तो एक सक्सेस स्टोरी आपने सुनी होगी NIVCD की, और उसकी सक्सेस स्टोरी मुझे इस तरह पता है कि मैंने कम से कम 10 लोग फ्रॉम KPK एंड बलूचिस्तान सिंध भिजवाए फॉर देयर हार्ट सर्जरीज. मैंने, बट देयर आर आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव गॉन टू सिंध टू गेट देयर हार्ट सर्जरीज, टू गेट देयर medical procedures for heart to be done there. तो NIVCD एक नो डाउट एक सक्सेस स्टोरी है. गम्बट हॉस्पिटल का आपने सुना होगा, कितने लोग यहाँ से गए, नॉर्थ से, इस्लामाबाद से गए टू गेट देयर ट्रांसप्लांट्स. तो ऐसी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप मुझे कहें कि कैन इट बी बेटर, इट कैन बी बेटर. वी कैन डू अ लॉट मोर, वी कैन, एंड देयर आर मैनी थिंग्स. आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. साइबर नाइफ का आपने नाम सुना होगा कि पता नहीं सुना. दैट वाज इंस्टॉल्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन जिना हॉस्पिटल. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू गेट देयर कैंसर procedures done on that cyber naif. It is done free. And what I am told in United States and other countries, each procedure costs $100,000. तो ऐसी कई स्टोरीज़ हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, मगर यस, अगर आप ये मुझे कहें कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, चीज़ें करने की गुंजाइश नहीं है, बहुत है. वी स्टिल नीड टू इम्प्रूव अ लॉट. Acha, there's a new story which has been the talk of the town, and it's very important, the audio leaks. Yes. Who do you think was the culprit behind these audio leaks, and how do you think this happened? Because this is an extreme security leak. मैं देखें, आजकल ऑडियो, किसी की बात टेप करना, किसी की कॉन्वर्सेशन टेप करना, दिस इज़ नो मोर that requires that specialty. You can have a phone here and sitting outside you can tape what is going on in this room. So this technology has now become very easy to acquire. There's a car parked there, they could be listening to all the interview that is going on here, and you don't need to be a CIA or an ISI to find out what's going on in this room. So it is very easy to tape somebody. It is very, issue is ke, is it something that is required, is it something that needs to be done, should we be doing this? That is the issue. And again we are doing politics with it, nothing else. Tapes आ किसकी रही हैं? Politicians की आ रही हैं, और politicians एक दूसरे को इन tapes के थ्रू चैलेंज कर रहे हैं और डिस्क्रेडिट कर रहे हैं. Is it required? Is it something that we need to do in politics? I don't think so. And what are we going to gain out of it? It's not valid in any legal position. Yeah. It's not valid anywhere. You can't use it anywhere. You can't get any any result out of it. What is the need? It is just tarnishing somebody's image, somebody's character. Somebody's just doing politics. I think audio leaks is just politics. But there could be a lot of sensitive data. So what if Mossad or CIA or RAW buys this data? What is the guarantee that the government will be able to contain this security breach? कि even अगर government ले लेती है, ये क्या guarantee है कि कोई और नहीं ये buy कर सकता? मैं आपको बताऊँ, nothing is safe. I think if RAW and Mossad and ISI and all the agencies in the world, they want to hear anybody, they can. देखें, अब वो ज़माना ही नहीं रहा कि आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कोई मीटिंग कर रहा हूँ, nobody will hear it. Those days are gone. You have US embassy sitting in diplomatic enclave. You think they don't listen to anybody who is talking? They listen to the birds even.
तो ये तो ये आपकी गलत फहमी है कि कोई इसको ढूंढ लेगा या किसी को. They can see everything. What are you talking about talking? They can see everything. What is going on? Those days are gone of thinking कि जी कोई इसको acquire कर लेगा. कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है. ये तो whoever is doing it for money. He's not doing it for anything else. अच्छा, lastly you very rightly said कि public office और politics में सिर्फ तभी आना चाहिए if you plan on serving the people. Of course. So would you tell our audience what is on your agenda currently? देखिए, my agenda is, and that is what I tell my staff and everybody, that every day you must assess how many people did we serve. What did we do today in this office? Did we help anybody? Did we solve anybody's problem? Did we do anything? If we did that, we are delivering. If we didn't do that, that means there is, चाहे हमने उसका फ़ोन पे हल किया हो मसला, चाहे उसका हमने फिज़िकली मसला हल किया हो, every day you must ask yourself कि what did I do anything for the people of Pakistan? If I did, then I am doing my work. But if you are not doing anything, and especially if nobody is coming to you, that's also a matter of concern. जी. If nobody is calling you, if nobody is coming to you with your problems, there's something wrong with your office. There's something wrong with your working. Because in this society, every day, people need your support. Yeah. तो in my office, सुबह से लेके रात के 12 बजे तक लोगों के या फ़ोन आ रहे होते हैं, या लोग मिलने आ रहे होते हैं, या उनके इश्यूज एड्रेस हो रहे होते हैं. तो ये this is the basic thing a political office needs to do. Challenge with that, we will wrap up this conversation. Thank you so much, Mr. Saleem Mandviwalla, for taking out the time for us. Thank you very much, Ji. Thank you for giving me the opportunity. No, we definitely enjoyed talking to you. Thanks. That'll be all for right now. Do join us again next week. If you like our content, like, share, and subscribe. I'll see you later.